Good morning, students. Today we are going to study the remote sensing in GIS. This is your first semester open elective subjects, and I am Dr. Shubha Bhargav, assistant professor SIRD Bhopal. We are going to discuss about this subject. Firstly, we have to discuss the scheme. In this, there is only 3 lectures, and in this section there is no practical. And scheme evaluation is evaluation of a scheme is on the basis of added term and mid semester and quiz assignment, in which 70 marks of end term exam, 20 marks mid semester, and quiz and assignment of 10. So total 100 marks subject is this one. Okay, and I think this much is your syllabus. In this, in first unit, we will discuss about the basic concepts, and some basic concepts you have already learned about the in your basic classes in first year also. There is a very preliminary basics remote sensing you have learned, and after that in the fourth semester in the geology you have learned some basic principles and their application, their advantages and disadvantages, as well as some limitations are also you have learned. And in case of GIS, you have also learned the basic functioning of the GIS, and as well as you have learned about the visual interpretation also. In this, we have discussed in fourth unit. So in the first unit, we will discuss the basic concept. Then second one is the platforms and the different type of sensors. And the third unit, this is geographic information system, GIS. Mm, in GIS, you have already learned the different basic concepts, and now in fifth semester you have to learn in the depth part. Okay, and in the fourth unit, data models are there, and in fifth unit, various integrated applications are integrated applications we will study. Okay, so these are the books of your remote sensing, and I think first one, John Wiley. This one is very good book, and this one is also, and one book of Lakshmi publication is also very good for the GIS, and we will discuss in class also. Okay, so today just come to the our main topic, that is remote sensing. What exactly it is? A remote sensing defined as a technique to obtain information about the object through the analysis of data collected by the spatial instrument that are not in physical contact with the object of investigation. Best example of remote sensing is our eyes. We can see too much distant things with the eyes, and we can recognize also. Okay, these information need a physical carrier of travel from the objects and event to sensor through an investigation medium, intervening medium. Okay, so when we see, तो we see, हम कैसे देखते हैं? Through the light. ओके, तो जो इलेक्ट्रो लाइट क्या है? रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नॉर्मली यूज्ड. तो रिमोट सेंसिंग में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही यूज होता है.
The remote sensing system is usually image represent the scene being observed. जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर खिंच जाती है वो दिखाई देती है, right? Then next one is our what are the platforms used for remote sensing? There is different type of, there is mainly three types of platforms are there. Ground based platforms, they are mounted, these type of platform mounted on a vehicles or a tower, clear, that is up to limit is 50 meters. Airborne platforms are those type of platforms which are mounted on the aeroplanes, higher altitude aircraft and balloons. Okay, so from these point we can take out the image. And spaceborne are those type of platforms like a satellite, shuttle and rockets from 100 kilometer to 36,000 kilometer. ओके, इसमें भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में देखते हैं. स्पेस शटल होगा, उसकी रेंज कितनी है 250 to 300. स्पेस स्टेशन से बात कर रहे हैं तो 300 to 400. लो लेवल सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर मूविंग अराउंड 600-700 to 1,500 kilometers. And high level satellites will be is the highest one about the 36,000 kilometer. Okay, so this is the about your platforms. And अगर हम पूरी हिस्ट्री में जाएं अगर, तो इसको सबसे पहले सोचा किसने है? So the technology of the modern remote sensing began with the invention of camera 150 years ago. मतलब 150 साल पहले कैमरे से ही एक रिमोट सेंसिंग की घटना की इजाद हुई है. ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड अर्ली डेज इन स्पेस एजेस. सबसे पहले रशिया और अमेरिका ने एक्चुअली इन्होंने इस चीज को शुरू किया था, जो कि इमेज मतलब एरियल फोटोग्राफ जो हुआ करता था उससे इसको लेना सबसे पहले स्टार्ट किया गया था. मतलब सबसे पहले एक एरोप्लेन के थ्रू एक फोटोग्राफ नीचे का खींचा गया, और उसके बाद उसका क्या किया गया, इंटरप्रिटेशन किया गया. तो उसके बेसिस पर जब हमने देखा तो ये सोचा कि इसके तो बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं और इसको हम बहुत सारी जगहों पर यूज किया जा सकता है. तो इस बेसिस पर धीरे धीरे हमारी नीड के हिसाब से वो हमारी बढ़ती गई, और हमने रिमोट सेंसिंग में काफी, आज की डेट में रिमोट सेंसिंग में काफी हद तक हमने विजय प्राप्त करी है. और बहुत एक अच्छे, मतलब अगर हम देखें तो आज की डेट में सरफेस के ऊपर 25 सेंटीमीटर की चीज को भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. आप सोच सकते हैं, हाई प्रिसिशन कैमरास आर यूज्ड फॉर दिस वर्क. Okay, so now come to the elements involved in the remote sensing. What are the different type of elements? There are several elements we can observe or we can see in this figure. First major source is a illumination, that is energy source. Our sun is the source of radiation. Then these radiation moved from the atmosphere from one place to another. That is in this figure you can see here this radiation coming from the sun and struck to the surface. Okay, so the medium is atmosphere. Then interaction with object. अब यहाँ पर ये क्या हुआ, इंटरेक्ट किया इससे ऑब्जेक्ट से. Then recording of energy by the sensors. अब यहां से ये गया और रिफ्लेक्ट होके तो
ये सैटेलाइट के सेंसर्स हैं, जो भी हमने बात करी कि स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेंसर्स होते हैं. These sensor sense the ऑब्जेक्ट. ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी अब क्या है, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हुई, जब ये यहाँ पर सेंस किया इस सेंसर ने, तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर. अब इसने सेंसर ने सेंस किया. देन अब ये जो डेटा आया वो ट्रांसमिट किया उसने रिसेप्शन पर. कहाँ पे, तो या यहाँ पर डेटा सेंटर पे देगा, या यहाँ रडार सेंटर पे, जहाँ पर भी उनकी सेटअप्स होंगे उस हिसाब से वो किया. देन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन, जैसे सपोज अगर एक कोई पिक्चर आती है, तो उससे आप क्या रिवील कर सकते हैं, उससे आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके लिए दैट इज अ एनालिसिस पार्ट. कि आपको पिक्चर दिख रही है, अब हाउ कैन यू इंटरप्रेट दैट दिस इज द एरिया एंड दिस थिंग इज दिस वन एंड दिस थिंग इज दिस वन. सो सपोज अगर ये कोई हिली एरिया है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी टाइप की रॉक अवेलेबल है. तो ये प्रोसेस के लिए क्या आता है, विजुअल इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन, टेक्सचर, एसोसिएशन. देयर इज अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स. On the basis of these parameters you can easily recognize these things. Okay, so I think remote sensing. Then come to the next one is the sensor. You have already learned about the type of remote sensing: active remote sensing and passive remote sensing. Only the difference is this: active remote sensing uses artificial energy sources. For example, satellite itself can send a pulse of energy which can interact with the target. Okay, so अगर हम दोनों चीजों में अंतर देखें, तो passive remote sensing are those type of remote sensing in which we are using sun as a source of energy, and the active, in case of active remote sensing, we are not using natural resource, we are using artificial resource. Okay, so this much is enough for you. Thank you.